Hello students, welcome back to our channel Kcyc. In this video we will continue with a second chapter, that is Pythagoras Theorem. In the previous video we did only the theorems and now we'll start with the exercise 2.1. Now chalo bachcho log, we will start with the first exercise in Pythagoras Theorem, that is with the exercise 2.1. Very easy बच्चा, very easy. Properties जब याद रखने का, Pythagoras Theorem, converse of Pythagoras Theorem, then theorem of geometric mean, and the first one, that is similarity of right angle triangle. Now चलो pay attention बच्चा लोग. First one बोला identify with reason which of the following are Pythagorean triplets. तो triplets है या नहीं बोलने का. If you check with your first one, it's very simple. I'll do only one. This is 3, this is 5, this is 4. If you check with your first sum बच्चा लोग, you get over 3, 5, 4. So we can say that since 3 square is equal to 9, 5 square is equal to 25, and 4 square is equal to 16. Am I right? 3 3 is 9, 5 5 is 25, 4 4 is 16. Now we can say that since 9 plus ये दोनों 9 plus 16 that is equal to 25, ये मैच हो गया. and यहाँ पे लिखने का that is since यहाँ पे लिखने का बच्चा लो that is the square of the larger number. ठीक है, the square of the larger number is equal to the sum of the squares. ठीक है, that is we can write ये लिखने का बच्चा लोग, that is क्या लिखने का, the sum of the क्या लिखा पढ़ो, that is the sum of the larger number is equal to the sum of the squares, that is sum of the squares of remaining two numbers. Two numbers लिखो या sides लिखा रहेगा, that is two sides लिखो, that is you can the square of the larger number लिखने से better है, that is you can say that is the square of the larger side is equal to the sum of the squares of the remaining two sets, and therefore we can say that is 3, 5 and 4 are Pythagorean, what you can say बच्चा लोग, triplet. and हो गया. So this is how you have to do your remaining. बच्चा लोग everybody can manage with your next one. खाली आपको square करने का है, that is बड़ा वाला नंबर. Suppose if you go with your next one 4, 9 and 12, तो 12 square is 144, 4 square is 16, 9 square is 81, 81 plus 16 अगर 144 आता है तो ओके है. अगर नहीं आया तो लिखने का since the sum of the larger number is not equal to the sum of the square of the remaining two sides, therefore they are not Pythagorean triplet. Now chalo everybody, we start with your second sum. Now we start actually with your geometry part over here. Now chalo check everybody what they are given over here. This is bachalo, this is your right angle triangle. डायग्राम देखो बराबर से, वेरी सिंपल है. दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल है और ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो एवरीबडी कौन सा प्रॉपर्टी समझ गया ना. सो गिवन में एवरीबडी इट्स वेरी सिंपल. आई सेड हैविंग ओवर ये गिवन में दैट इज एंगल एम एन पी is equal to 90 degree. Then we get over this is segment NQ is perpendicular to segment MP. You got over here MQ is equal to 9. Afterwards I'll write on the board over there. This is equal to 4, and what we need to find is NQ. Very simple. Now check everybody what they given over there. We'll write one by one over here. ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये MQ बचा 9 है, ये कितना है 4. So we'll write over the solution. So यहाँ पे लिखो that is in, ये लिखो बच्चा, in right angle triangle MNP, we say that is since NQ is perpendicular towards that बच्चा MP, and therefore मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा था that is NQ square ये is equal to ये बच्चा that is क्या बोलेगा MQ into QP, and that is we say this is theorem of geometric मीन. हो गया. दिस इज MQ कितना है बच्चा 9, ये कितना है 4. सो दिस इज NQ, मैंने NQ लिखा, स्क्वायर नहीं है, तो इसका हो गया 3 into 2 and finished. You get over here that is NQ is equal to 6. So simple. Now check, I will do sum number 3, sum number 4 and sum number 5. Sum number 3 is exactly what we did with sum number 2. तो सम नंबर 3 में कैसे है बच्चा, ये 90 डिग्री है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. सो दे गिवन दिस, वी हैव टू फाइंड QR. तो सोल्यूशन में बच्चा लोग सबसे पहले ये लिखने का, दैट इज इन
right angled triangle. What is the name of that बच्चा? QPR. We write over that is since segment what they are given बच्चा PM. देखो टेक्स्ट बुक में देखो दिया हुआ है that is segment PM is perpendicular to segment what is that बच्चा QR and therefore use your property that is PM square ये is equal to QM into you say this is MR and you got a reason over here that is theorem of geometric mean. PM square everybody we know that is 10 square. QM है बोर्ड पे this is 8 into this is MR. ये बच्चा 10 square this becomes 100 upon 8 इधर गया this is equal to MR and we get away MR is equal to 8 how much है बच्चा 8 1 जा 8 9 10 that is how much 20 20 बोलेगा तो कितना 8 2 जा कितना आ गया बच्चा 60 then 8 5 जा so this is you get MR is equal to 12.5. क्या पूछा है चेक करो everybody you asked that is QR so we will write over here this is QR very simple बच्चा is equal to क्या आएगा बच्चा QM plus MR रीजन आएगा Q डैश M डैश R ये ऑलरेडी दिया था ये हमने फाइंड आउट किया and we get over QR is equal to 20.5. so this is how you have to do this sum. now check बच्चा लोग ये अभी ये दोनों सम्स है ना आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज दिस इज विथ 30 60 90 थ्योरम एंड दिस इज विथ 45 45 90 थ्योरम इवन इन योर 9th स्टैंडर्ड में भी था बच्चा 30 60 90 थ्योरम अदरवाइज मैं भी बोलता हूँ आपको और इस 30 60 90 थ्योरम दैट इज इन अ ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 30 वन एंगल इज 60 वन एंगल इज 90 देन दैट इज कॉल्ड एज अ 30 60 90 ट्राइंगल that is called as a 30 60 90 triangle. So what is a theorem? That is the side opposite to 30 degree is half the hypotenuse. Again I repeat, that is the side opposite to 30 degree is half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. The side opposite to 30 degree is half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. Now check everybody over here. ये दिया है 30, ये दिया है 90, ये निकालने का सबसे पहला. So you can say with solution over here that is in the triangle RSP. I'll write in short angle R plus angle S plus angle P is equal to 180 degree. Reason आएगा बच्चा लोग सबको आता है the sum of the measures of an angle of a triangle is 180 degree. Angle R हमको ढूंढना है angle S that is 90 this is 30 is equal to 180. Angle R is equal to 180 minus how much 120 and we get over this is angle R is equal to 60 degree. So you got 60 therefore you should write that is triangle RSP is a ध्यान दो बच्चा 30 60 90 ये लिखने का बच्चा triangle. It is a 30 60 90 triangle. Now what we are going to use is a 30 60 90 theorem. अभी बोला the side opposite to 30 degree you should write over here by 30 60 90 theorem. The side opposite to 30 degree कौन है RS. फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ ए hypotenuse what is that बच्चा RP. RS we know already that is 6 this is 1 upon 2 into RP ये इधर चले गया and we get over RP is equal to 12. This is how you have to do. अभी RP आ गया next और एक आपको find out करने का that is your PS. I'll do it over here. Again we say over here RP आ गया अभी PS again we say over here by 30 60 90 theorem. अभी यूज करो ये 60 आया ना बच्चा the side opposite to 60 degree. The side opposite to 60 degree कौन है SP. Formula root 3 upon 2 times of your hypotenuse. So this is root 3 upon 2 hypotenuse अभी मिला 12 that is 2 कितना सा 6 जा and SP is equal to 6 root 3. So everybody keep in mind again I repeat the side opposite to 30 degree is half the hypotenuse and the side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. फिर ये होता है 45 45 90 theorem. What is 45 45 90 theorem बच्चा 45 45 90 theorem में that is the congruent sides मतलब ये is equal to 1 upon root 2 times the hypotenuse. अभी यूज करके बताता हूँ. चेक एवरीबडी. ए पहला क्या दिया हुआ इफ यू चेक टेक्स्ट बुक में
For finding AB and BC with the help of the information given in the figure, complete the following activity. That is AB is equal to BC. Q. AB is equal to BC. This AB is equal to BC. That is, you can write over here. That is given, लिख दो बच्चा. That is better. They are done marking over here. Therefore, angle BAC बच्चा अगर ये congruent है तो इसको बोलता है isosceles right angle triangle. मैंने isosceles triangle नहीं बोला. It is isosceles right angle triangle. तो ये 45 है तो ये एंगल बनेगा कितना बच्चा 90 डिग्री. अभी बोला फॉर्मूला ए बी, ये फॉर्मूला 45 थ्योरम. दैट इज व्हाट वी से, दिस इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, आई कैन पुट ओवर, दिस इज 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ योर hypotenuse. So what you get, 1 upon root 2 time of your hypotenuse. Again over here this is 1 upon root 2. This is what you get over here बच्चा लोग is your root 8. We'll do this simple calculation over here. This is 1 upon root 2. ये सबको ही आता है बच्चा, 8 मतलब सबको मालूम है ना, जस्ट आई एम शोइंग यू. 4 2s are 4 बाहर आ जाएगा, that is 2 root 2. This root 2 and root 2 is cancelled. So we get over here, therefore AB is equal to BC, and that is equal to how much you get over here, 2. So this is your sum number 3, sum number 4 and sum number 5. For sum number 4, 30 60 90 theorem, the side opposite to 30 degree is half the hypotenuse. The side opposite to 60 degree is root 3 upon 2 times the hypotenuse. इसको बोलते हैं 45 90 theorem. That is, the congruent sides is equal to 1 upon root 2 times of your hypotenuse. So this is your sum number 5. Now check with your sum number 6 and 7. Again very simple sums. 6 में क्या बोला है? Find the diagonal, find the side and perimeter of a square. I'll draw a diagram over here. So this is what you get over here. This is what you get over here is a square. So let us assume this is A, B, C, D is a square. और ये हो गया diagonal which they are given as 10. एकदम simple है. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. तो we say that is since quadrilateral, pay attention बच्चा लोग, ABCD is a square where you are given over your diagonal, that is BD is equal to 10. ठीक है, what they have asked, that is 10 centimeter. What they asked is the side. We will assume over here that is let the side of a square, let the side of this square ABCD, will take it as BX. Now you can check बच्चा ये कितना रहेगा, 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा. तो if you go over here with this one, or if you want you can write that is since angle DAP is equal to 90 degree, that is the angle of a square, and now we can say over here that is in क्या लिखा बच्चा, right angle triangle DAP. ये देखो बच्चा लोग ये x है, ये x है, ये मालूम है, तो we can use over here by Pythagoras theorem. What does your Pythagoras theorem says बच्चा लोग over here? That is hypotenuse square BD square is equal to AD square plus AB square. This is 10 square. This is x square plus x square. This is 100. This is 2x square. And x square is equal to कितना आएगा, 100 upon 2. X square is equal to कितना बच्चा, 50. X is equal to 25 into 2. And therefore x is equal to 5 root 2 centimeter. This is what you get over here, the side. Therefore you can write over here the side is equal to 5 root 2 centimeter. Next पूछा है perimeter. Everybody you should know the formula for perimeter with 10th standard में आप लोग. So the perimeter of a square is equal to 4 into side. So 4 side already is there, that is 20 root 2 centimeter. So this is how you have to do your sum number 6. Now this is again very easy. देखो ये कितना बार किया हमने, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री में 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर इधर है, बट यू आस्क्ड दिस पहले इजी निकालते हैं. Now the solution we say over here that is in right angle triangle EFD. We say that is FD is perpendicular to ED, and बोलो बच्चा लोग क्या आएगा, FG square is equal to EG into this is GD. That is क्या बोलेगा, everybody can write that is theorem of geometric mean.
FG square is, we know this is 12 square. EG we are supposed to find. GD दिया है 8. This is 144 upon 8 is equal to EG. 8 कितना सा बच्चा? 8 1 सा 8, 9 10 11 12 13 14. 8 8 सा, and we get over this is EG is equal to 18. Now बच्चा लोग, everybody can manage on your own अभी. This is equal to 18. Then you'll go with this triangle over here. This is a right angle triangle. You know this side, you know this side. You can find out this side by Pythagoras theorem. Everybody can do on your own. Over here also in this triangle, bachcha log, you know this side, you know this side. This side again you can find out by Pythagoras theorem. I think everybody can do. You or if now check with your sum number 8. 8 is very easy. जैसा square किया था ना, same way we have to do. ये तुम्हारा rectangle है. Pay attention बच्चा. Very simple. This is your rectangle. Suppose A B C D. This is, find the diagonal of a rectangle. You have to find out what will be the diagonal of a rectangle. If the length is 35 and the breadth is how much बच्चा? 12 centimeter. Simple. ये कितना रहेगा बच्चा? 90. Everybody can do. It's very simple. So we say that is since quadrilateral ABCD is a क्या बोलेगा? Rectangle. Therefore we can say that is angle A will be equal to 90 degree. That is, you can say via angle of a rectangle. I think everybody can do on your own now this one. That is, we say in right angle triangle DAB, you can say over here that is by क्या आएगा? Pythagoras theorem. चलो चलो बोलो BD square. चलो अभी मैं कर रहा हूँ, ये पहला वाला सम आपको बोला था करने के लिए. दिस आई एम डूइंग. प्लस दिस इज over here AB square. AD square is 12 square. This is 35 square. 12 square is 144. This is, how much is this बच्चा? This is 1225. आते हैं ना 35 स्क्वायर, बचपन में किया रहेगा ना. शॉर्टकट मालूम है आपको? 35 स्क्वायर कैसा निकालेगा? 35 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 45 स्क्वायर. सिंपल है बच्चा. देखो ये 5 है ना, तो ऑलवेज लास्ट को 25 लिखने का. 3 के बाद क्या आता है? 4. 3 4 सा कितना आता है? 12. ट्राई विथ एवरीथिंग, यू विल गेट दिस. If you add this बच्चा लो, this is over here 9, this is 6, this is 1369. ऐड हो गया बच्चा 1369 is a perfect बच्चा. ये perfect है किसका है? This is 37 and therefore we get over the diagonal is how much? 37. Now sum number 9 star mark किया है बच्चा. स्टार किया है. It's very simple. Logic समझो कैसा करने का है. You can do this very easily. See the proof. चेक. पहले ये लिखता हूँ. ये ना ये मिड पॉइंट है, तो वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन से द वेरी फर्स्ट थिंग ये बड़ा बच्चा है ना, ये क्यू आर, तो यू कैन से दिस इज क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ व्हाट यू कैन से वेयर दिस इज आर एम. दैट इज ट्वाइस ऑफ आर एम और एम क्यू भी आ जाएगा. दिस इज वी से, ये खाली ब्लैक वाला याद रखना. दिस इज द व्हाट दे आर गिवन ओवर हियर, दैट इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. अभी कैसा स्टार्ट करने का? इधर पी क्यू है. कैन यू सी एवरीबडी व्हाट इज ओवर देयर? पी क्यू. एंड पी क्यू किधर है? ये इधर आते हैं पी क्यू. सो गो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल और पी क्यू तो लेके आओ, आधा उतना तो करो. तो वी से इन, वेरी सिंपल बच्चा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू, इधर 90 है. सो विल यूज ओवर या बाय पाइथागोरस थ्योरम. यूज या पाइथागोरस थ्योरम ओवर या क्या आ जाएगा बच्चा? दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस व्हाट यू कैन से दिस इज क्यू आर स्क्वायर. हो गया ना तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया. आधा सम तो हो गया. पी क्यू आ गया, पी क्यू आ गया. अभी चेक करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. पी आर इज ओवर हियर, क्यू आर नहीं है इधर, मैंने पहले से ही लिखा क्यू आर इज दिस वन. सो व्हाट यू डू ओवर हियर, दिस इज पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर और क्यू आर बोलेगा तो क्या? दिस इज ट्वाइस ऑफ आर एम, दैट इज द होल स्क्वायर. एंड यू कैन से फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2. नेक्स्ट वन ओवर हियर, दिस इज पी क्यू स्क्वायर इज पी क्यू स्क्वायर, दिस इज पी आर स्क्वायर और ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा? आर एम स्क्वायर. अभी चेक करो कौन कौन मैच हो रहा है. चेक पी क्यू पी आर पी आर. ये आर एम नहीं मैच हो रहा है, हमको आर एम नहीं चाहिए. अभी आर एम निकालो. आई विल गो विथ अदर कलर ओवर हियर. आई विल गो विथ ब्लू का डॉटेड जाता हूँ. आर एम वेयर इज आर एम? ये इधर है. मतलब आर एम कम्स इन दिस ट्राइंगल. सो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना, उधर पाइथागोरस यूज करूंगा. चेक वी से
in right angle triangle PRM used over here by Pythagoras theorem. बोलो बच्चा लोग क्या आएगा Pythagoras theorem? That is PM square. ये PM square is equal to PR square plus what you get over here, this is RM square. हमको RM रिप्लेस करने का ना, तो RM एक साइड में, मेरे साइड में बाकी का, this is PM square minus PR square is equal to RM square. अभी ये दोनों स्टेप से करेगा. I will do it over here. यहाँ पे करता हूँ, please pay attention everybody. I'll do it over here. So ये दोनों स्टेप्स में इधर मैचिंग हो रहा है, तो we say this is from statement number 4 and 6. See the 7th बना, ये बच्चा मैच. This is PQ square. उधर भी as it is PR square, ये PR square, ये 4. इधर क्या RM बोलेगा तो ये रिप्लेस होएगा. This is over here PM square minus PR square. हो गया बच्चा लो. This is over here PQ square. This is PR square. Open this, that is 4 PM square, 4 PR square. This is PQ square. ये 4 PM square I am writing it as it is. ये बच्चा लोग 1 minus 4 is how much? ये PR है ना, तो this is 1 PR minus 4 PR is 3 PR square. And check, प्रूव किया. PQ square, 4 PM square, 4 PM square, 3 PR square, 3 PR square. And everybody go through, understand. दो ही लॉजिक यूज किया. ये पहला ब्लैक कलर, फिर ब्लैक में इधर अटक गया, हम लोग ब्लू कलर में गया, रिप्लेस किया, then we got your answer. So this is how you do your sum number 9. Now check with your last sum, that is your sum number 10. Everybody can manage on your own. मैं आपको पहले स्टार्ट बताता हूँ, फिर खुद से कर लो, कुछ नहीं करने का, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का है. जैसा एक सम में बोला वैसे आप लोग कर लो. चेक एवरीबॉडी सम नंबर 10. स्टार मार्क किया, कोई स्टार का जरूरत नहीं बचे. इट्स वेरी सिंपल. वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर. तो एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, तो रिप्रेजेंटेशन में AB विल बी 1 बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग्स आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज CD इज योर सेकंड बिल्डिंग. इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, दिस इज बेटर. ठीक है. वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top touches the window of a building at a height of 4 centimeter. और टर्निंग, तो एक लैडर यहाँ पे चलो, विल गो विद दिस वन. तो यहाँ पे ये लैडर है 5.8 मीटर का और ये विंडो है ये, तो ये हो गया 4 मीटर का. ठीक है. फिर उसको ये साइड में टर्न कर दिया, तो ये साइड में टर्न कर दिया तो ऐसा हो गया. ठीक है. So we got a ladder 5.8 meter long. This is 5.8 meter long. Is placed on the street such that its top reaches the window of a building at a height of 4. On turning the ladder over to the other side of a street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. तो ये है अभी यहाँ पे ये विंडो है. This is 4.2 meter. लैडर वही है ना बच्चा, तो ये 5.8 मीटर का ही रहेगा. आपको बोलने का है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. यहाँ पे P लिखते हैं. तो एवरीबडी हैज टू डू दिस सम ऑन योर ओन. आई विल एक्सप्लेन. कुछ नहीं करने का बच्चा लोग. आप लोग बोलेगा दैट लेट ए बी विद अ स्मॉलर बिल्डिंग, लेट दिस विद अ बिगर बिल्डिंग. ये दिस इज योर लैडर ऑन द फर्स्ट बिल्डिंग, दिस इज अ लैडर ऑन द सेकंड बिल्डिंग. तो कुछ नहीं करने का बच्चा लोग. आपको पहले ये ट्राइंगल जाने का. ये ट्राइंगल में आपको ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है. यू विल फाइंड आउट दिस साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम. Then again over here ये बिल्डिंग में जाने का, you know this side, you know this side, again you can find out this by Pythagoras theorem. और फिर आपको पूछा what is the स्ट्रीट कितना है, that is you can say that is CB is equal to CP plus PB, that is C dash P dash B, and then you will get over here this is CB. खुद से करो, जितना भी आएगा उतना meters. This you have to find out first by Pythagoras theorem. Again you have to find out this by Pythagoras theorem. I hope everybody इतना बताने के बाद you can use your basic Pythagoras theorem and you can do the sums. So over here we finished with your first exercise. All 10 out of 10 sums are there. कुछ delete नहीं किया है. Next exercise में का some sums are deleted. So we finished with the exercise that is 2.1 over here, not 1.1, 2.1 over here. I hope everybody understood. Go through your sums properly. Try to understand with your first exercise. Next exercise will start with a new exercise, that is exercise 2.2 बच्चा लोग. Till then, bye bye, tata, take care.